really don't know क्या बोलूँगा. So okay. आज हम पहले दो चीज़ हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. एक है किस तरह का प्रोसेस को प्रैक्टिस करना चाहिए वो सही तरीके जानना. दूसरा है क्या ऑब्स्टेकल्स हैं. ये दो चीज़ हम क्लियरली हम अंडरस्टैंड करेंगे देन भक्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती. सो वो दो चीज़ के एस्पेक्ट में हम चर्चा करेंगे. भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है जस्ट लाइक बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग एक साथ रह रहे हैं. इट्स रिलेशनशिप. तो किधर भी रिलेशनशिप होता है ना उधर रस होता है. तो परिवार में सबके अंदर अच्छी रिलेशनशिप है तो इस परिवार में जीने का मन करेगा. कोई रिलेशनशिप नहीं है देन घर आने का मन नहीं करेगा. इज इट. सो नाम और भगवान के बीच में कनेक्शन है देन नाम लेने का मन करेगा. संबंधी नहीं है वो एक चीज हम नहीं करना चाहिए. तो इसलिए शुरुआत में भक्ति हमेशा कष्ट रहता है. देयर आर इसमें हम लोग सुने एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी में क्लियरली बताया जाता है कि आपका क्या होगा फ्यूचर में. क्लियरली डिफाइंड. आप अच्छी एस्ट्रोलॉजी से मिलेंगे वो बता देंगे आपका ये होगा ऐसे होगा बिकॉज आपने क्या कर्म किया उसके सबसे फल मिलेगा. बट उस एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन को ब्रेक करने का एक ही शक्ति है वो कृष्ण भगवान में. कितनी लोग अपनी कर्म को तोड़ना चाहते हैं. थोड़ा ध्यान से सुन सकते हैं. छोटी सी साइंस है बट वेरी वेरी डीप है. तो एक संस्कार, सेकंड होते हैं वासना और तीसरा होता है वृत्ति और फोर्थ होते हैं एक्शन. तो संस्कार है वो तो हमको पता नहीं है हमने पिछले जन्म में क्या किया है कितनी जन्म में क्या किया हमको पता नहीं है. वो आइडिया नहीं है. बट वासना है एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं. हमारा टेंडेंसी क्या है वो एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं. एंड देन वृत्ति है वो है हमारा माइंड सेट. तो वो अब बोलते ना ये मेरा माइंड सेट ऐसा है मैं ऐसा ही करूंगा. तो माइंड सेट के हिसाब से हम एक्शन भी करते हैं. सो इधर वीकर लिंक है वो है वृत्ति दैट इज माइंड सेट. कैसे कृष्णा भावना मृत इस पूरी साइकिल को तोड़ सकते हैं. इट्स बाय हियरिंग. जब हम श्रवण करते हैं अनेक एनर्जीज इन्वेस्टेड है. एक एनर्जी है वो शुरुआत में क्या हम सुनते हैं और याद करते हैं. जैसे बचपन में आप सब हैं आपका याद करना होगा नहीं स्लो पर रिसाइटेशन ये सब में रिमेम्बर करना होगा. इसको बोलते हैं धारण शक्ति. इफ यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग देन हाउ यू विल नॉट एक्ट. नहीं इसलिए शुरुआत में मगअप करो. इसलिए हम श्लोक को पहले रिसाइट करते हैं याद करते हैं हमको इस अर्थ भी नहीं पता रहता है इसको मतलब क्या. बट इसके बाद होती है मननम. मननम का मतलब है कंटेम्पलेट करना. इसमें विचार शक्ति इन्वेस्टेड है. विचार शक्ति मतलब है अंडरस्टैंडिंग. मान लीजिए हम 16 माला करना है इसको हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन 16 माला बहुत कष्ट होगा. इसलिए भक्ति शुरुआत में बहुत पेनफुल होता है. कितने लोग अनुभव है. यस बहुत पेनफुल है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. कोई चीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको करना बहुत मुश्किल. नेक्स्ट स्टेज है अंडरस्टैंड करना. कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ऐसे कोई साधक है वो बहुत आनंद ले रहे हैं इसमें. उसके जैसे लाइक आपका इतनी भाग्यशाली है महाराज का संग मिलते रहते इज रिलीजिंग भक्ति. सो साथ रहने से क्या होता है हमको भी फेथ मिलते हैं. हाँ इसमें कुछ आनंद है. अभी मेरे को मिल नहीं रहे बट है इसमें. सो एक इंस्पिरेशन होता है. देन कोई ऑलरेडी प्रोसेस में नरिश कर रहा है उससे डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना. शास्त्र से डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना. सो इससे क्या होगा हम उसको सही भावना से क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हैं. इधर है एक इंस्पिरेशन मिलता है. जैसे हम लेक्चर सुनते हैं तुरंत हमको इंस्पिरेशन मिलता है करने के लिए. सो अंडरस्टैंडिंग से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. इसका बोलते हैं विचार शक्ति. एंड देन इस जगह में आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होता है.
द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज अवेकन। अभी तक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवेकन नहीं है, इसके वजह से एक मैकेनिकल रहता है। जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवेकन होता है ना, देन हमारा विशेष सर्कल है, वो कर्मा है, उसको क्या करते हैं, करती है। So now, because once you get the spiritual intelligence, you are going to act differently. मतलब knowledge changes the action. जैसे हम पहले हम कैसे जिए, कैसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने अपने एक्शंस को चेंज किया। सो आध्यात्मिक बुद्धि से एक्शंस चेंज हो जाती है। एंड देन ऐसे प्रैक्टिस करते करते विवेक शक्ति हमारा को प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं निधिध्यास। विवेक की शक्ति मतलब है नेचुरल हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है। सुबह नेचुरली उठेंगे 4 बजे, जैसे मैं देख रहा था जब 4 to 6 आप सब जब करते हैं। सो पहले बहुत कष्ट होता है, अटेंडेंस कम होते हैं, बट आप देखेंगे धीरे धीरे साल कैसे बीतेगा, अटेंडेंस अच्छा होगा, क्योंकि इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, देन नेचुरली यू विल टेक इट। सो दैट विल नेचुरली हैपन। उस समय में वो नेचुरली कर रहे हैं, इसका मतलब है इज इन स्पॉन्टेनियस। इट्स दिस स्टेज आप नो मोर आपके ऊपर है कर्म एक्ट करना। थर्ड स्टेज में कर्म एक्ट नहीं करना, एंड इस स्टेज में आप मैटर के पीछे स्पिरिट को देखेंगे। यू विल बी एबल टू सी द स्पिरिट बिगिन द मैटर। सो दिस इज द वे टू सी द लॉर्ड। भगवान का देखने का तरीका ये है। अदरवाइज आप इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, वी मे सी द डीटी बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो जब इस प्रोसेस में जाएंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जब प्रॉपर विवेक से, देन आप देख पाएंगे भगवान क्या है। सो भगवान का दर्शन करने का 4 शक्ति है। एंड देन ये एक छोटी सी था हाउ ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, एक साइंस है, और आप लोग इतनी भाग्यशाली हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। सो यू शुड टेक इट इन प्रॉपर वे। एंड देन सेकंड थिंग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैष्णव रिलेशनशिप। और आप अच्छा, आपके परिवार में वैष्णव है, सो उधर कितनी अच्छा रिलेशनशिप होगा, उतनी अच्छा आप लोग को उन्नति होगा। सो रिलेशनशिप है वो दो तरह, मतलब बिफोर गेटिंग टू दैट, 2 तरह का रिलेशनशिप, मटेरियल रिलेशनशिप है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। मटेरियल रिलेशनशिप क्या है, पृथक भाव। पृथक भाव मतलब है मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है। सो मैं गौरवपूर्व से इसलिए मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि गौरवपूर्व से मेरे को कुछ मिलेगा। जब तक मेरे को गौरवपूर्व से कुछ मिलेगा, मेरा संबंध अच्छा है। जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है, देयर इज नो मोर रिलेशनशिप। सो मटेरियल रिलेशनशिप एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं, उस एक्सपेक्टेशन नहीं मिलने की वजह से वो संबंध नहीं रखता। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि इन द मटेरियल लेवल में देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। इट्स वेरी शॉक टू हियर, बट दैट्स ट्रू, बिकॉज हर व्यक्ति किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। बट वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर इन स्पिरिचुअल लाइफ नाउ। हम वो पृथक भाव नहीं रहते हैं, आप पृथक भाव। आप पृथक भाव मतलब है हम सबका एक ही भाव है। हम इतने लोग बैठे हुए हैं, हमका अलग अलग हृदय है, इज इट नॉट, बट हमका एक भाव है। एक भाव क्या है, भगवान का कैसे सेवा करना, शरणागत होना, प्रेम करना भगवान से। सो दिस इज ऑल द सेम थिंग। सो इसलिए जब भगवान परिचिता से मिले थे तो बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न। क्यों प्रसन्न हुए, आप लोग इतनी लोग मिलकर पानी के अंदर जाके तपस्या किए हैं। तपस्या से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि आप प्रत्यक्ष धर्मस्य, आपका सबके अंदर एक ही ऑक्यूपेशनल है, ड्यूटी है, वो क्या है, मेरे को प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, वरदान मांगो। सो सुहृद बोलते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, देयर आर 4 लेवल ऑफ रिलेशनशिप। सो कोई भी रिलेशनशिप में 4 लेवल होते हैं आध्यात्मिक में। एक है बंध, फर्स्ट लेवल इज बंध, सेकंड लेवल इज मैत्रिय, थर्ड लेवल इज साखी, एंड फोर्थ लेवल इज सुहृद। सो हर रिलेशनशिप में 4 लेवल्स होते हैं। सो द फर्स्ट लेवल बंध मतलब है एक वेल विशर टाइप है, मैं इंडिया का हूँ और मैं इस देश का हूँ, वी आइडेंटिफाई द कंट्री, आइडेंटिफाई द ग्रुप, इसका उससे एक यूनाइटी मिलता है, उसको बंध बोलते हैं। इट्स मोर ऑफ मटेरियल। एंड सेकंड है मैत्रिय। मैत्रिय मतलब है हम सब वैष्णव हैं, प्रभु जी तिलक लगा हुआ है, हरे कृष्णा प्रभु जी, वी रेस्पेक्ट, जनरल रेस्पेक्ट आते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ डीप रिलेशनशिप, रेस्पेक्ट भाव से हम ट्रीट करते हैं। एंड तीसरा है वो है सौख्य। सौख्य मतलब है वी सी गुड क्वालिटी इन अदर्स, हम सबसे अच्छी क्वालिटीज देखते हैं। एंड देन गोपी माता जी, आप ना
सीधा बैठ के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, हर गुण है, बट सीधा जो के सुनेंगे ना आप और अटेंटिवली सुनेंगे. सो यू हैव सो मेनी क्वालिटीज, बट हम फीडबैक नाउ, ये लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, आप फीडबैक ले सकते हो. यू कैन नॉट गिव फीडबैक डायरेक्टली. फीडबैक देने का मतलब है आपने कोई बैंक में इन्वेस्ट किया ही नहीं, आपने विथड्रॉ करना. यू कैन नॉट विथड्रॉ विदाउट इन्वेस्टमेंट. फीडबैक इज अ वेरी हाई लेवल. इसलिए फीडबैक देंगे ना, बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है, पर लोग बहुत सामने पर यार कैसे बोल दिया इसने. So feedback is at third level, that is sakya. Sakya means almost that is apratak bhav. Apratak मतलब दोनों को हृदय सेम है. They're इतनी क्वालिटीज देखते हैं एक दूसरे को. And then if you say something ये करेक्ट करना तो वो लोगों को बुरा नहीं लगता. To accept feedback is not easy, but the safest level of relationship is sakya. इससे भी सबसे टॉप मोस्ट सुहृद. सुहृद मतलब हम दोनों हृदय एक ही है. इधर कितनी भी हैं हम सब यार एक ही है. We have no other goal to serve the Lord, to please the Lord. हमारा कोई अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो है सुहृद. That level of relationship we need to reach. हम आप देख सकते हैं आप किस लेवल में हैं, बट हम धीरे 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 क्या करना चाहिए, we to reach to सुहृद. That is what this process helps. ये प्रोसेस आपको बंद का लेवल से लेके आपको सुहृद का लेवल में लेके जाएगा. That type of relation, that उस तरह का संबंध है, is very very high. जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के एक फ्रेंड आए थे, फ्रेंड आके मिलने के लिए आए थे, और इतनी वो 3 घंटे तक मूर्छित हो गए. 3 घंटे तक they were faint. आप सोच सकते किस तरह का लेवल. तो ये रिलेशनशिप सिर्फ ऐसे नहीं है, सबके लिए बहुत जरूरत है. रिलेशन, ये फ्रेंडशिप है, that is for the soul. His friendship is for the soul. भगवान कृष्ण को भी फ्रेंड्स चाहिए. He is in the Golok Vrindavan. He has friends. So ये फ्रेंड्स हैं, सबको जरूरत है. But what kind of friendship? That is very good. मैं कहने का मतलब है, you're all so nice. इतनी अच्छा है. So develop such kind of relationship. आप प्रत्येक भाव, भी एक गोल हो, प्लीज भगवान का प्लीज करना, एक दूसरे का प्लीज करना, नॉट फॉर अवरसेल्फ. आपको कुछ सेटिस्फाई नहीं करना, नो प्रॉब्लम. And my existence is for not my satisfaction. This is the Vedic culture. Vedic culture का मतलब ये है दूसरा को खुश करने के लिए. Vedic culture means happiness. वो हम इधर एक establish करना चाह रहे हैं. और जैसे like जिन कुछ बता रहे थे कि the role model create करना है. So role model किस तरह का role model? एक कमी है. Is there any person here वो इस philosophy को practice कर रहे हैं? And then they are living. So you all can show to the world that हम इस कलयुग में रह के भी हम कृष्ण भावना मत में रह सकते हैं, और परिवार में बहुत ही अच्छी आनंदित होकर भगवान की सेवा कर सकते हैं. And we can exist in this कलयुग. If you can set an example, everyone will change. अमेरिका में एक सबसे बड़ा एक रिलीजियन है, बहुत स्प्रेड हो रहा है. नो फिलोसफी, वो लोग के भाई कोई फिलोसफी नहीं है, बट मेन है कि देर इसी तरह का एटिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं. हैप्पी फैमिली जी, मतलब खुश रहे. एंड दे वेर प्रॉपर ड्रेस, दे हैव कमिटेड टू ईच अदर, एंड खुश रह रहे हैं. और काइंड ऑफ आवर कल्चर है, बट कोई फिलोसफी वाला नहीं है, बट उसको बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ये दुनिया में कोई खुश भी है. नहीं, सो दुनिया में खुशी व्यक्ति बहुत सरप्राइजिंग है. It's very highly impossible to be happy. So ये मैं just छोटा मैं ये बता रहा था कि how we should aim for this, and then हम इस तरह का relationship develop करने प्रयास करेंगे. We'll definitely be happy. This is the one part, and the second part is सबसे important है. इसको block करते हैं, कौन सा चीज block करते हैं? इसके block करते हैं offenses. Offenses क्यों हैं? Offenses सुन के हम बहुत ज्यादा offenses सुन के ज्यादा डर जाते हैं. डरने की बात नहीं है. ऑफेंसेस ये है कि हमारा एक अटैचमेंट टू दिस बॉडी है, शरीर का लेवल में ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, नेचुरली रहेगा. मतलब शरीर से कितनी ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे उतनी हम दूसरों को डिसरेस्पेक्ट करेंगे. ये ऑफेंसेस आती है मेन कारण प्राइड की वजह से. सो मैं इसमें डिटेल ही नहीं जाऊंगा. इससे हमने बिना वैष्णव अपना तो कैसे जी सकते हैं.
that I'll tell you. You can apply that. इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इस बहुत बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं. Okay, I found this on the web first at that I will tell you that is check it out. So, अच्छा, सब लोग बीच में लेक्चर के थोड़ा तो नींद तो नहीं आ रहा सब. मैं क्या बोल रहा था, ऑफेंसेस से हम कैसे मतलब बचे नहीं. आप जीवन भर ऑफेंस कर ही नहीं सकते इस प्रिंसिपल को फॉलो करें. कितने लोग रेडी हैं? अच्छा, ओके. तो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल से भक्ति में आप सबको पता है वैष्णव अपराध, एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस. श्रीधर स्वामी बताते हैं कि इस वैष्णव अपराध से बचने के लिए वैष्णव को सेवा करना चाहिए. सो आप सोचें वैष्णव को ढूंढने, आपका घर में ही सब वैष्णव है, तो एक दूसरे को आप सेवा करो. इसी में करने से ज्यादा जल्दी किसको अपराध करेंगे? घर में ही लोगों को अपराध करेंगे. माता पिता के करेंगे, माता पिता बच्चे को करेंगे. सो एक दूसरे का सेवा करना. यू नीड टू सर्व. जस्ट बाय सर्विंग ईच अदर यू विल कम आउट ऑफ वैष्णव. एंड देन 4 चीज है, 4 चीज से आप वैष्णव कर सकते. भक्ति आश्रय स्वामी महाराज की. तो 4 तरीके से हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं. पहली चीज है, जैसे पतंजलि के हिसाब से कोई भी चीज को हम देखते हैं ना, ये माइंड नेगेटिविटी देता है. किसी भी पर्सनालिटी को देखो, आपको कुछ नेगेटिव, यार इसके अंदर ये कमियां हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए था इसके. सो ये माइंड का फंक्शन है नेगेटिविटी को देखना. सो उस समय में क्या करना चाहिए? पॉजिटिविटी को लेके आना चाहिए. अभी हर चीज में नेगेटिविटी देखो तो हम तो पागल ही हो जाएंगे. सुबह से कुछ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव चलो तो पॉजिटिव बताओ बताओ, ये तो पागल हो जाएंगे. एटलीस्ट द मेजर प्लेस जस्ट लाइक उन्नत वैष्णव के बीच में हम रह रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिविटी आ रहा है, उस समय में उसके बारे में ग्लोरीफाई करना. होली धाम में है, धाम में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, ये क्या है धाम है, ऐसे ऐसे है. उस समय में शास्त्र के साथ भगवान के नाम को, सॉरी धाम के बारे में गुणगान करना, गुरु का बारे में गलत विचार आ रहा था, गुणगान करना. तो इस तरह का हम भाई ग्लोरीज को बताने में हम क्या सकते हैं, माइंड को नेगेटिविटी से बच सकते हैं. और सेकंड चीज है, जैसे हरिनाम है, हरिनाम को आप फोटोकॉपी करेंगे तो पता है क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? हरिनाम को फोटोकॉपी करेंगे, श्रीमद् भागवतम. हरिनाम को फोटोकॉपी करने से श्रीमद् भागवतम मिलेगा. श्रीमद् भागवतम इज नथिंग बट ग्लोरीज ऑफ द होली. जब श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, हरिनाम का महिमा बहुत बढ़ेगा, हमें हरिनाम में रुचि बहुत बढ़ेगा. एंड देन भागवतम पढ़ने से हमारा सबसे बड़ा बीमारी है वो ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या चला रहा है. ईर्ष्या के वजह से ही ऑफेंसेस करता है. सो बाय रीडिंग श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद बुक्स, इससे हम क्या कर सकते हैं? ईर्ष्या से बाहर आ सकते हैं. एंड देन ऑफेंसेस से बाहर आ सकते हैं. तीसरा चीज है कल्टिवेटिंग ह्यूमिलिटी, विनम्रता को कल्टिवेट करना. हाँ, विनम्रता को कैसे कल्टिवेट कर रहे हैं? विनम्रता क्यों नहीं होते? मैं और मेरा की वजह से. मैं कौन हूँ? आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. मेरा क्या है? ये सारे सब मेरा हो गया तो अच्छा है. so उसको उल्टा करना. वी नीड, जैसे लाइक हमने उस दिन हमने प्रार्थना भी थोड़ा बहुत कर रहे थे. सो मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ. और मेरा कौन, मेरा क्या है? कितना भी मेरे चीज प्राप्त हुआ ना मेरे को, वो सब भगवान ने दिए. एक माय लॉर्ड, यू हैव गिवन मी एवरीथिंग टू मी, एंड यू, आपने बचपन से मेरे को गाइड कर रहे हैं. हाँ, इसलिए मैं, मेरा एकमात्र इच्छा है, whether you give me good or bad, मैं just आपका सेवा करना चाहता हूँ. In this way we can develop humility and then prayerful attitude. हम क्या कर सकते हैं? हम मैं और मेरा का बीमारी है उसको खत्म कर सकते हैं. और सबसे लास्ट है श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा को मेडिटेट करना. श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, हाथ ऊपर करके बोला कि कोई वैष्णव अपराध करने का इच्छा का त्याग एक बार भी कृष्ण का नाम लेगा ना, देन वो उसको मैं स्वयं आऊंगा लेने के लिए. So that much merciful श्री चैतन्य महाप्रभु. एक था गोपाल, आज का शिवास गोपाल चतुर्थ, वो शिवास ठाकुर को मतलब उसको एंट्री नहीं मिला संकीर्तन में.
सो श्रीवास ठाकुर का घर के बाहर सारे दुर्गा का सामग्री को रख के इसको बुरा नाम करने के लिए दारू रखा और भी क्या बोलते हैं बैंगल्स को छुरी कंगन ये सब। देन सुबह सुबह श्रीवास ठाकुर बोल देखो आप लोग सोचे मैं महान वैष्णव हूँ, अब देखो मैं दुर्गा का पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत खत्म हूँ। तो ब्राह्मण ने सबको साफ करके पता नहीं कोई बदमाश ऐसे किए। तो कुछ ही दिन में 2-3 दिन में उसको क्या हो गया, कोढ़ का बीमारी हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु से माफी मांगा है मैंने बहुत बड़ी, अब तो पति पावन हूँ, मेरे को उधार छोड़ो, इतनी कष्ट हो रहे हैं। महाप्रभु ने बोले कि अब तक ये सूर्य चंद्रमा है, जब तक मैं मेरा इच्छा है आप कष्ट में रहो। I don't want you to be get rectified. You should undergo this pain. Then फिर भी रोते रहे, इसको विनम्रता था कि महाप्रभु को भगवान माना। then महाप्रभु ने बोला ठीक है आप श्रीवास पंडित से जाके माफी मांगो। श्रीवास पंडित से जाके माफी मांगे। श्रीवास पंडित ने बोला मैं तो इतनी श्रेष्ठ नहीं हूँ, आपको शरण नहीं दे सकता हूँ, आप पुरुषोत्तम आचार्य के पास जाओ। पुरुषोत्तम आचार्य के पास गए और पुरुषोत्तम आचार्य ने उसको नाम दिए देवकी नंदन दास। देवकी नंदन दास ने एक सुंदर गीत लिखा है, वो है वृंदावन वासी जते नहीं, सारे वृंदावन वासी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सारे जगन्नाथपुरी के वासी को सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और मायापुर वासी नवदीप वासी को, इस तरह का सारे वैष्णव को प्रणाम करना है। बोला जाता है इस वैष्णव गीत को हम डेली गाएंगे, वैष्णव अपराध से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। सो दिस इज वन वे वेयर हम वैष्णव अपराध को क्या कर सकते हैं, रूट आउट कर सकते हैं। एंड देन हम रिलेशनशिप में हम क्या कर सकते हैं, डीपर जा सकते हैं। मैं छोटा मोटा पता नहीं था ऐसे इतनी कंटेंट हमारे हम तो कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें बोल देते हैं। आप कुछ so yes. So you were telling about material relationships and spiritual relationships. So कई बार हम spiritual relationships की foundation क्या होता है, हमें पता कैसे लगता है कि इसका center कृष्णा है relationship का। क्योंकि कई बार हम relationship में होते हैं and we think that this is a Krishna centered relationship, but बाद में वो pain cause करता है। So how do we know that if it's a Krishna centered relationship or not? I already said this, there is apratak bhav. अप्रत्यक्ष भाव मतलब है यू डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे से इसको क्या मिलेगा। जनरली मेटल रिलेशनशिप में अब बोला ना मेरे को डिससैटिस्फैक्शन होता है सफरिंग, दैट मींस यू हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। सो व्हेन यू हैव सम एक्सपेक्टेशन मींस दैट द डिग्री यू हैव एक्सपेक्टेशन विद दैट मच डिग्री यू हैव सफरिंग because I don't fulfill. So that is the root cause. But here it is not about what you expect from me, it is not about what I expect from me. We both together we fulfill the expectation of Krishna and spiritual ones. So this is what makes a big difference. Maybe we may not be able to act both, but still we are in one common point, we are together because हम दोनों को करना है, सुबह उठना है, माला करना है और मेरे को आपको सम्मान देना है, आप मेरे को सम्मान, because this is what Krishna wanted. एक दूसरे को करना, obedient रहना, disciplined रहना, आज्ञाकारी रहना। Yeah. Even while fulfilling the expectations of Krishna in relationship, there are certain expectations formed in the relationship itself. So मतलब I do not get you. In the relationship. So even when, can you give some example? For example, there are two friends. They are trying to satisfy the expectations of Krishna by serving Krishna. अब उस सर्विस में भी कई बार रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होते हैं। दैट इज ट्रांसजेंडर, दैट्स व्हाट दैट मेरा एक आइडिया है भगवान को इस तरह का पुश करने के लिए, आपको एक अलग आइडिया है पुश करने, सो दैट विल वेरी, दैट्स व्हाट वी आर इंडिविजुअल, बट द कॉमन पॉइंट वी बोथ आर वांट टू सर्व द लॉर्ड, सो that will not lead you anywhere, that will be a transcendental competition or transcendental thing, but that make you, but at the common point we are together in that. That will not lead to hatred, which I feel, but you will always contemplate me, इससे अच्छा मैं सेवा करूंगा, इसलिए भगवान का मतलब कौन जाके पहले पकड़ेंगे, everyone is trying, that is there, so that will be there, so that is there in spiritual world. Mainly thing is that
the degree your heart is more pure, this tendency to serve Krishna will be more natural. And the impure state, there could be tinge of material thing also. That is what causes no suffering. So no problem, keep doing, and then serve each other, and then offer obeisances each other. मतलब ये सारे प्रणाम करना, सेवा करना, उसको गुण लिखना, ग्रेटिट्यूड फील करना, ये सारे एक्टिविटीज हैं, हम कंडीशन स्टेज में हमको अपलिफ्ट करेंगे. ये सब नहीं करेंगे तो देन नेचुरली हम सिर्फ फॉल्स से देखते रहेंगे, देन वो अपलिफ्ट होगा तो देन वो ज्यादा प्रॉब्लम. कंडीशन स्टेज में ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड का बहुत जरूरी है. नेचुरल स्टेज में ग्रेटिट्यूड नहीं है, नेचुरल है, बट इस स्टेज में हम सबसे बड़ा हम ये वैल्यू नहीं करते मेरे को क्या मिला इससे, हम ये देखते हैं इससे मेरे को क्या नुकसान हुआ और क्या गड़बड़ हुई. सो उसी में ही हम मेडिटेट करते रहते हैं. सो इफ यू कैन मेडिटेट मोर देन, इसलिए मैंने बोला था कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए. जैसे हम लोग में मिलते हैं तो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैल्यू करें कि ये मेरे जीवन में कितना कंट्रीब्यूट किया. That type of activities हम भक्तों के बीच में इस तरह ना दो लोग को खासकर वो दोनों के बीच में समझने उसको बारे में बोलना शुरू करते हैं, दे वेरी हैप्पी. उस ना वो एनवायरनमेंट ही कंप्लीट चेंज हो जाता है. मे बी दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आल्सो शुड बी. How can you institute prabhuji? Like every Vaishnava should speak about other Vaishnavas. बहुत सिंपल, आप लिस्ट पेपर में चेक लेना, दिन लगा एक डिवोटी आएंगे लेंगे, उस डिवोटी को ग्लोरीफाई करेंगे. और एक काम करो, मान लीजिए जानू माता जी और गोपी माता के बीच में समस्या है, वो पता है, अचानक क्लास में अभी गोपी माता जी गुणगान करेंगे, जानू माता जी को, जानू माता जी गुणगान करेंगे, बहुत मुश्किल होगी. जानवी बहुत ही अच्छी है और डीपी वर्शिप करती है और बहुत मुश्किल है. अब अचानक एक्सरसाइज में कृष्ण के बारे में देखो, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, बोल नहीं पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव एन हैबिट ऑफ ग्लोरीफाइंग. इस कल्चर को लेके आना, कितनी ज्यादा एक्टिविटीज ऐसे करेंगे ग्लोरिफिकेशन को, आप देखेंगे कमियां कम होगी. क्योंकि कलयुग में कमियां का कल्चर है, ये नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. बट इफ यू डेवलप दिस एक्टिविटीज कल्चर, ग्लोरीफाइंग थोड़ा बहुत अंदर है ना, अरे यार इतनी, वो दूसरा सुन रहा है ना, यार इसके अंदर इतनी गुण है, मेरे अंदर कितना ईर्ष्या है इसके ऊपर, एक भी नहीं दिखा ये तो 2-3 मिनट तक गुणगान करते रहा, मेरे को तो एक भी नहीं आ रहा. So then they also get released. किसके ऑफेंसिव मेंटालिटी भी है, वो भी रिलीज हो जाते हैं और वो भी थोड़ा प्यूरिफाइड हो जाते हैं. तो इससे जिसका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है वो गुब्बारा बन गया तो गुब्बारा तो नहीं बना. That's okay. वो गुब्बारा ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया तो अपने आप को कुछ और समझने लग गया और हवा में उड़ने लग गया. हाँ, उसको भी ग्लोरीफाई, ज्यादा हवा में उड़ गया तो वो भी ग्लोरीफाई करता है ना. और भी लोगों को ग्लोरिफिकेशन हुआ तो that's okay. ये वो गुब्बारा ठीक है. Yes, anything else? Is there any limit or boundary to glorifying? Because I heard somewhere that it's in the etiquette that we should always glorify. There is no limit to glorification. That old Golok Vrindavan atmosphere is all about glorification. Always glorification. वो सीसी में पढ़ते हैं कि एक जेंटलमैन को ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना ग्लोरीफाई करना चाहिए. वो कैसे समझ सकते हैं उसको? महाराज वो रामचंद्र पुरी का महाराज की बात कर रहे थे तो सम्मान करने के लिए कोई मना नहीं करता. सम्मान देना हमारा हमारी मानता, लेकिन जिनको आप सम्मान करेंगे तो सम्मान के लायक भी होना चाहिए. इसलिए हम कहते हैं कि सम्मान करना में आज दे डिजर्व, जथा जिनको जितना डिजर्व करते हैं इतना सम्मान करना चाहिए. जिनको ज्यादा चाहिए उनको कम किया वो भी गड़बड़ है, जिनको कम चाहिए उनको ज्यादा किया वो भी. दैट्स व्हाई स्वामी
कृष्ण जिससे सामग्री किसको मन से करना है, किसको वाणी से करना है, किसको शरीर से करना है, सेवा करना है कृष्ण। दिस आर द साइंस respecting us. Yes. That's why we have to learn. We have to take lesson. Yes. That's why it is said that sakale samana karite sakati deha nathi jatha jatha. Please teach me how to respect others. Learn this. Okay. It's this particular shloka, Apraja Sarashani Premji Shamashri Madhusudhan. If we chant this in the morning or evening, all offenses committed to any Vaishnava is nullified. Is it verified somewhere? Whatever the sloka we recite, but it should be put it in action. As by reciting, what happened? As like हमने वैष्णव का सम्मान करना, वास्तव में सम्मान करना चाहिए, उसको ज़्यादा जीना चाहिए। जब वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन हमारे हृदय में भरा होगा, कैसे करें? सबको वैष्णव का हम सम्मान कर रहे हैं। How will you feel like offending someone? So main thing is that कि ऐसे भाव हमारा लेके आना है, just by reciting. That's it. That has to be done in development. Okay, sir. This is the question. Yes. जो भी काम कर रहे हैं हमारी प्रशंसा के लिए तो हम इस बात से करते थे, लेकिन हमको पता कैसे लगे कि एक्चुअली में उन चीजों से जिनको हम डायरेक्टली सेवा नहीं समझ पाते, उसको अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वक्त बता देंगे, वक्त बता देंगे। So, इसलिए यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो कृष्णा प्रसादम भगवती। भक्त प्रसन्न मतलब है भगवान प्रसन्न, गुरु प्रसन्न मतलब भगवान प्रसन्न। There is no other way. इसलिए प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि don't try to see Radha Krishna in the bush of Vrindavan. Right? You can see Radha Krishna only by serving the instruction of the spiritual masters. That is the way to see the Radha Krishna. By serving the instruction of spiritual master, by the mercy of spiritual master, you can see Radha Krishna. Not by so when you serve the instruction of the devotees, Krishna is pleased. Because the devotees are not different from Krishna. Sakshat Haridhani Samsara. Right. Yes. Yes, yes. Gratitude and humility is not different. It's the same. Gratitude is humility, humility is yes. जजमेंट मेंटली कभी होना नहीं चाहिए। ये भी एक समस्या है कि मैं देखता हूँ ये भक्त है या अभक्त है, देन वो फंस जाएंगे इसमें। ये समस्या है, ये भी नहीं देखना है। बिकॉज भक्तिनों तक दो चीज है इस दुनिया में सबसे कीमत है, एक है लिविंग एंटिटी, एक है हरिनाम। इस दो चीज को हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। हर जीव को भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर जीव के अंदर है ये भक्ति लता बीच प्रेम लता है, कृष्ण का प्रेम वो है इसके अंदर। ही इज कैरियर ऑफ कृष्ण प्रेम। सो एनी टाइम बाय मीटिंग विद वैष्णव वो भक्त बन सकते हैं। सो इसलिए उस जीव को हम हर जीव को वैल्यू करना चाहिए। जैसे महाराज बोलेंगे, बट हमको सीखना चाहिए किसको कैसे रेस्पेक्ट करना है। इस तरह अलग अलग that could be understood, because sometimes what happens is that I have observed in myself and in others, say, years of practicing, trying to practice emotional skills, that there tends to be a lot of sometimes social pressures carry our decisions. Yes. You know, like suppose
whatever, like, you might be in a temple where its distribution is so like overwhelming, center focus that even if you're not that, then you have to, speak for it. Means means you have to do things which, Yeah. because there is social pressure. So I think that as a devotee, as we are, growing, and so how do we, try and maintain that level of honesty within ourselves? That, yes, we respect others, we respect their choices, but at the same time, we should also be true to ourselves and our calling or our inclination. So I've seen a lot of devotees make mistakes or commit to things which they never wanted, but because of social pressure, they committed. And then they feel so unfulfilled in their lives later on because they committed to things that that was not really their thing, but because everyone else is glorifying, so they were also like. It's kind of status quo, kind of. I want to maintain my like, I have a certain career in the outside world. Somehow I have to maintain this so that people always think that I'm this. So actually, this comes by which as in, like, there are various stages of bhakti and there is a various stages of crisis. If they're not trained in various stages of bhakti and the crisis, then what happens is the devotee becomes stunned, just like a child. If he's not trained from the beginning stage, various aspect, even after 20 years, he does not know the basic things. In bhakti also, if we are not trained in various stages and their crisis, and then we are just growing just like that, then we may be 20 years, but even we may not be knowing the basic things of Krishna consciousness. So one thing is the proper guidance, what level we are in, and what kind of practices and what kind of crisis we are facing. Just like in the beginning stage of bhakti, that is Shraddha stage, the crisis is that independent mentality. Independent mentality is called by listening from the spiritual master, and then that wants to, because we always tend to be independent. We want to do the way we want. We may practice bhakti, but we have a different way of doing bhakti. I will think that this is what the bhakti is. If that disease is not cured at that time, then he does not progress to the next stage. So the next stage also has a different crisis, and then we have to, just like a child, in every 5 years he has a different challenges, and he has to be trained in that. The same way the bhakti also. That's how the honesty comes, because he's been growing, no training and education, and he reached 20 years, and he says, "I'm a senior devotee now." In my case, I'm so many years in movement. Now I have to maintain myself that people are respecting me, so I should maintain that I am a good standing. I'm a good speaker, elegant speaker. I maintain this. So it becomes an external aspect. It does not go into internal. So what you spoke about honesty is, so one should be clear that am I developing the love towards Krishna, love towards my spiritual master, love towards devotee, and then my offending mentality is getting. So we have to focus on this aspect, not the focus on what others are thinking. This is nothing but a materialistic way of practicing bhakti, because everyone will not glorify me, or they will think that I am a devotee, I am not going to temple, and what they'll think. So let me, if I don't chant 16 round, what the people will think. So let me chant. So that type of bhakti, what happens is that it stops in between. Because it becomes mechanical, and mechanical things does not go for a long time. So that's why the practice of bhakti is that what is the goal for practicing, that should be very clear. The goal is the devotion. And as Prabhupada was asked, what pleases you more? Book distribution, preaching, what is the preaching? Everyone was thinking that Prabhupada will say book distribution and this and that. Prabhupada said, if you can develop a little love for Krishna, that will please me the most. So we should be very clear from the very beginning what is our goal. Then there is no what others are thinking. Then honesty comes. I see that I have so much of anartha.
I see that I have so many years I passed in my devotional life. I don't have any love for Vaishnavas. Still, I have this basic issue. The small kids are growing very nicely than me. They have good taste for the holy. I am such a fool. Uh, so I'll take humbly their shelter. I can follow their footsteps and then get some devotion. It doesn't matter who is young or who is old. The matter is who is matured and devotional service. So when your goal is very clear, we'll take shelter of anyone. If goal is not clear, we'll expect that everyone should take my shelter because I'm more in uh, Krishna consciousness. So it's all about what is our goal. Goal drives the process, not the process drives the goal. When the goal is set, then we act according to the goal. The goal is not clear, and then our process is like we may be like what you're saying, we will be distracted by what others are speaking. So end of the day, what they say that does not carry us towards Krishna. That's what I feel that fixing the goal. Because the problem in the material world is how to do. But first thing is why I should do. What I will get by doing this. So one way of practicing honesty is mindfulness of practice. When you that is why the sadhana is. Otherwise, it is ritual. When you do sadhana, we are mindful of what we are doing, and we have a deep understanding of the process. That is what the sadhana. Sadhana means aiming towards the goal. Then we are doing practice. Otherwise, that is not a sadhana. It's a ritual, and ritual you cannot do for more time. Ritual, mechanical thing, any day will stop. Small calamities, finished. I don't know. I'll answer this point. One is that education, we train in different crises, helping them so that their goal is very clear, and then it becomes easy for them to practice devotional service. And then he grows, he's happy also. Just like child grows in the beginning stage, he needs help from the parents. After that, he need a friendship. After that, he need a teachers to guide. So like that in bhakti practice also, different stages, we should guide them nicely and then make that goal very clear that to developing love towards Krishna. Then these external things will not make it. Otherwise, we need to take taste. No, we have no taste in devotional service, and we have to drive taste from the external things, glorification. This, that. That is what nourishes my heart. Harinam is not nourishing. So, but ultimately, I have to be nourished if I want to be in devotional service. So I look for the organizational growth or the name, fame, and prestige, and all these things. Said, when the goal is clear, then the process is order-driven. Yes. And that process is sadhana. You have to be mindful in that sadhana. So what is being mindful? Mindful means, see, I am doing just like I'm listening Krishna Katha, I'm chanting the holy name. So when I'm chanting the holy name, I'm consciously touching the Krishna. And I am in that consciousness, I take it with it. I'm with Krishna. And this will help me to be connected to the infinite. So how, and then when I hear, I am touching Krishna. This is the right attitude of life. There will be eagerness to hear. No, you don't have any goal and you hear. You'll be boring, and then you feel like sleeping. I know that this transcendental vibration, through this transcendental vibration, I'll be touching Krishna. So that will inspire so much. My Lord, I got the way how to touch Krishna. Is it not? So that will give you a lot of inspiration. Even though you may be in strive all this, but the goal is clear. Just like you're a businessman, you know that by doing this I'll get this. The goal is very clear. So that the goal drives you to work hard, isn't it? It's not that कि चलता है यार कुछ करते रहते कुछ ना कुछ तो मिलेगा. It's not like that, is it not? It's the same formula is that for how much austerity you will do, because you can clearly see if I hit this, I'm going to be successful. So that's what now the more focus has to be to make clear the goal. The goal is clear, process becomes easy. That's where the reading of Srila Prabhupada books, hearing from advanced devotees, they are fixed up in goal. And there, by hearing from them, we'll be fixed up. That's what we are discussing. The association of the Vaishnavas are very intimate, who was fixed in the goal. That's why you're all fortunate to have Maharaj sisters. And we should take maximum advantage of that.
In that way, our goal becomes clear. So like the effect that it had on our consciousness, it's less volatile. So I got it. So you are saying that we just become thinking only, but it does not come actually. So it comes initially, but then we get used to that thing. yeah, that mentality, the way you do, you see, we hear and then we become very excited. Yes, I got it. Now I'll practice this, I'll get this. 1 + 1, 2. But it doesn't work like that. How it works, it is in attitude of service. How it is attitude of service? Oh, I read Srila Prabhupada books. I hear from Vaishnava. Oh, it's amazing. It's mercy. You feel gratitude. Now I will apply this to please him. It's not that now we are getting an enjoyment mode. By this, I will be successful. Now it is not like that. When you reach Srila Prabhupada, you're so excited that the mercy of Srila Prabhupada is has been revealed to me. I will apply this to please him. When you get into the pleasing mode, service mode, then it becomes, you will keep doing it. Service attitude, you will keep doing it. Enjoying attitude, 1, 2 day, 3rd day, mechanical. Generally, this is what happens. Many times we are into enjoying mood. 1, 2 days we practice, and 3rd day it becomes mechanical. Just because you were explaining about honesty, how can we be more authentic in our dealings with the Vaishnavas? Because over the time we develop this tendency to pretend. Pretending is very poisonous actually. That can lead to a deceitful nature. So how can we be very, very authentic? How we are feeling, how we are showing ourselves between the juniors and seniors. Authenticity. Mainly they are image consciousness. Image consciousness, there is no relationship. If you have a relationship, then they will not be an image conscious. You know that this person is going to help me out. At least at front of him, I will not be pretend myself. Because if I pretend, you will not get anything. It's not a material relationship, it's a spiritual relationship. We take an example with marriage. If you are married, you have to present yourself what you are. You are with a doctor. So with a doctor, if you pretend that I'm free from disease, then why do you go to a doctor? You go to a doctor, explain that I am suffering from this disease. Is there any way I can be helped? That's what Prabhupada said. The first symptom in advancing Krishna consciousness is first you should know that I'm diseased. Then you take treatment. If we don't know that you are diseased, then there is no point of taking medicine. And there is no point of image consciousness. So image consciousness better low, taking selfie and seeing this or that. So, but in spiritual world, it's not something different. You have many questions. What is that one quality in Vaishnava that will completely liberate him from committing offenses? That means in the Vaishnava system, so one quality. One quality. I said the serving Vaishnavas. So That's that liberates us from committing. liberate, yeah. That will help us because if you serve Vaishnavas, you develop glory. You get that qualities also. You cannot serve if you have offensive. It's not easy. If you have offensive humanity, you cannot do anything. But if you serve, then yes. So what I just wanted to, what you just said, that we should be clear about the goal, and we should always ask ourselves why we are doing what we are doing. Yes, please. So then that helps in being more honest. More inner part, more inner, not an external way. If we don't focus on this, we will be looking the pleasure in out external things. This is the issue. Actually. Pleasure has to be there. So now, if you look for internal pleasure, external things will not happen. Otherwise. Yes. Punctuality leads to Spiritual progress or spiritual progress leads to spiritual progress. so in the beginning, Vedic Bhakti, we need discipline.
discipline, because yeah, discipline is required, but discipline is not a criteria to get Krishna. That is help us, because everything discipline is there. So Vidhi Bhakti it is good, but it is not. It helps. मोटिवेट कौन करता है? Punctuality है कि इतना मुझे करना ही है. नहीं, पंचुअलिटी तो एयरपोर्ट में पूरी पंचुअलिटी है. एयरपोर्ट में पंचुअलिटी बहुत है, बट एयरपोर्ट में टाइम पे होती है सब कुछ. इसका मतलब नहीं कि वो स्पिरिचुअली एडवांस है. Spiritual progress नहीं करता. वही हेल्प करते हैं, ये एक्टिविटी हेल्प करते हैं टाइम पे. प्रोग्रेस में ये डिसिप्लिन होना होता है. जैसे भगवान को उठाना है, सुलाना है, खिलाना है, पता है कि इतना करना है. मतलब ये एक रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्ट है. We are so serious about that. Relationship भी है. Yes. Thank you. I think I take it next time. Manage करते हैं. Prepared नहीं. Thank you. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब आशीर्वाद दीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगा पहले बार में. So Hare Krishna, let us express our deep gratitude for His grace, Gopi Bhav Prabhu, by loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra once together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we are very grateful to you, prabhuji, for now you have become a very integral part of this Gita Academy family. You know, from the Namamrit camp, I think everyone has fallen in love with you. So, and so we are very, I think what I attended the entire camp, but I couldn't go to, I couldn't make the other trip, the last trip. But it's like we're getting much more deeper into our japa, you know. So with all the things you're sharing with us, at least we are starting to think more, go deeper, and really appreciate this great opportunity that we have in Kali Yuga. You know that simple sa process se, we can benefit so much. So, but it takes effort. It takes a conscious effort. It takes honesty. It takes, as he said, punctuality. Discipline. So many things. But the more we are able to appreciate the knowledge behind, this great room that we have in this age, so much appreciation is there in our scriptures for the holy name, and we see all our great, acharyas. I remember when I first came to Krishna consciousness, so started studying the Gita in the US. Everything sounded really nice, but I couldn't understand why, they're chanting like this japa, So I started going to the Bhagavad Gita class, and I really loved the philosophy, but when it came like all this chanting, it was like, it seemed too weird, people dancing up and down, shaved heads. It was like a little, I was not used to that. So, but then the more I read about the acharyas, I started reading about the 6 Goswamis and, Haridas Thakur, and they all they were doing was, most of the time they were only chanting. I said, they are chanting all the time. So at least start chanting one round. So I said, kuch to karna padega, bhai, like you may find this weird dancing, but all the great acharyas, all they're doing is, they're doing so much, japa, and they're getting so much taste, and they're dedicating the whole life to chanting. I thought now, like, there is no escape. Ek mala to chalu karna padega. So from there it started, and it makes a big difference when we read about the acharyas, and how dedicated they were. So then we realize that we have so much
so much to improve, so much to go. And thank you very much, Prabhuji, for giving all these deep insights and speaking about relationship, which is like the core of Vaishnavism. You know, so, but we have to be honest and cultivate good, healthy relationships, honest relationships. So then they become deeper and they last much longer and they're more authentic. So thank you very much. और महाराज आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने बताया ये कि unnecessarily praise also is not being honest. You know? So this is one, because sometimes we see everyone gets into the mood and you know बहुत चढ़ा देते हैं, you know, वो भी एक kind of ठीक है, it's better than criticism, but थोड़ा सा sober रहना पड़ेगा. Yes, महाराज. हाँ जी, हाँ हाँ. So वो cheat नहीं करना चाहिए. ये बहुत अच्छा एक point है that we should be conscious of what we are saying, and again as Prabhu shared with us, we should ask ourselves, do we really mean this? No, is it coming from, is it authentic, or we're just doing it just because three others are saying, तो चलो मैं भी एक थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा के और बोलता हूँ, हाँ, फिर वो क्या होता है, बस यही होता है, एक कोई और बोलता है तो वो तो बोलता है ये भी आपका ये क्वालिटी जो एक फॉल्ट है उसको भी यू नो ग्लोरीफाई कर देते हैं. इसको में होता है कभी कभी यू नो लाइक लीडर्स द फॉल्ट इज सो ऑब्वियस बट उसको भी ये तो बहुत ही देखो ये यू नो अपना अग्रेसिव नेचर भी पूरा अपने गुरु को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू नो as if like that is also एकदम pure devotional service going on. So I think that we have to be, you know, sober as Maharaj has reminded us and Prabhuji has reminded us. Thank you very much. So now we have 1 more hour to go, Kirtan. So Sagar Prabhu is also here. So we should start. Yes, Maharaj? No. Different states. Different states. So what we can do is actually Prabhujis can move in front and Matajis can move at the back. Right? It's better for Maharajas. Huh? No, Maharaj, you. Now the stage is taken over by them. Okay. इधर ही कर लेंगे ना. हाँ इधर ही करेंगे. लेकिन जब महाराज लेक्चर देंगे तो फिर हाँ. Now we have a better sound system. Hare Krishna. Yes. Thank you for joining Bua, Vrinda and Simran Mataji. अब अभी कीर्तन स्टार्ट हो रहा है. महाराज के लेक्चर में दोबारा लाइव कर दूंगा. Hare Krishna, 6:30. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna.